तो स्वागत है आपका डे 21 में 21 बुक रिव्यू चैलेंज के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनकन्वेंशनल बुक द 4 आवर बॉडी बाय टिमोथी फेरिस। ये किताब आपको दिखाएगी कैसे आप अपनी हेल्थ, फिटनेस और लाइफ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मिनिमम एफर्ट के साथ। फेरिस ने अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च से जो इंसाइट गेन किए हैं उन्हीं पर यह किताब बेस्ड है। अगर आप अपनी हेल्थ और फिटनेस गोल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस बुक में हम 6 मेजर टिप्स पे बात करने वाले हैं जो फेरिस ने हमारे साथ शेयर की हैं। दिस 6 experiment or tips are very important for your body. He done lot of experiment with his body and the labs, with the in labs, and take out the data. All the data he has shared. On that basis, he concluded 4, 5, 6, or we can say that 6 habits. A slow carb diet. Slow carb diet is very important factor of fat lose strategy. फेरिस सेड स्लो कार्ब डाइट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा वाइट कार्ब डाइट। He said you have to replace some food like chapati, rice and breads. You have to replace with the vegetables and beans. He said if you want to replace it, so by default your fat reduce in very fast way. He has taken one example like that. We take example. Example is suppose you are taking the bread in the morning. You can replace with this some vegetables or beans, like you can take sprout or anything, or if you want you take the eggs, then you can take eggs, because he said you have to take those things which enrich with the proteins and fibers. Second tip is minimum effective dose concept. Ferris said you have to work out on minimum effective dose. There is no meaning to spend your time in gym hour and hour. You have to take out which exercise or which action will create more impact towards your goal or towards your whatever theme you have or decide for you or fitness. He said you have to focus whatever you are taking little time, you completely focused and effective. And let's take example. He has given, I like that example a lot. Like he said water, you take the water for the boiling to increase the temperature of it to boil, and your purpose is boiling the water, and boiling temperature of the water is 100 degrees centigrade. If you boil the water continuously, its temperature never goes up to the 100 degrees centigrade. Boiling work has done. Third is Occam protocol for muscles gain. Ferris said Occam principles protocol is very important factor. He said आपको throughout the 7 days don't need to go the gym. You need to go gym 2 to 3 days, and you can gain muscles whatever you want. And he taken the example like that. He said if you add in your exercise like dead weightlifting and press, bench and pull-ups, if you add these exercise, by default you get the muscles gain. You have to do effective exercise. Don't need to go more in the gym. 2-3 days is sufficient for it. Next is very important thing, improving sleep quality. Generally we neglect it. Improving sleep quality is very important for your health and performance. Ferris ने बोला है कि ये sleep quality improve your health and your performance as well. It's a very significant factor for you. And he also said, he given the 3 tips like that. He said if you are going to sleep, you have to do the dark room. Second is आपको room को ठंडा रखना है. Third is you have to avoid the blue lights before going to sleep. सोने से पहले आपको blue light से avoid करना है. Like he has given some examples. He said if you कुछ lights अगर आपको disturb करती हैं बहुत, तो you have to use blackout curtain. And if you are also facing the blue lights because you are watching the TV, phones before going to sleep, then it means it will disturb your quality and you have to avoid it. So these are the tips for the quality sleep. अगला tips very important है, that is unconventional health hacks. In this Ferris shared some unconventional hacks, जिसमें से पहला है he said आपको आइस कोल्ड बाथ लेना चाहिए. ये आपको आइस कोल्ड बाथ आपकी फैट लॉस एंड रिकवरी को स्पीडी बनाता है और इसको हेल्प करता है स्पीडी रिकवर करने में. एंड सेकेंड हैक he has shared with
less effort you can also make your sex life enjoy or make good or better with using some of the techniques. He has shared in this book some techniques, and example he has shared, if you taking the ice cold bath, then आपकी body जो more energy और more calorie को release करेगी to maintain your desired temperature of your body, so it will help you to reduce your fat in fast. Next is, as a project manager I like it tracking and experiments. ही फेरिस मोटिवेट करते हैं रीडर्स को, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो ही सेड आपको वो चीजें ट्रैक करते रहना है और उसको मेजरमेंट करते रहना, बिकॉज ही सेड जो चीजें आपके लिए काम कर रही हैं इन दी रिजल्ट्स में उन्हें कंटिन्यू करें, जो चीजें काम नहीं कर रही हैं, इफेक्टिव नहीं है फॉर योर बॉडी, देन यू हैव टू एलिमिनेट। और विद दिस हेल्प क्या होगा कि आप अपनी बॉडी को कस्टमाइज एक्सपेरिमेंट you can elaborate for you. So he recommended a lot to tracking and experiment with your body, and let's say he take an example like he said, अगर आप कोई वर्कआउट डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स नोट करना शुरू कर देना चाहिए, एंड अगर आप स्लो कार्ब डाइट यूज कर रहे हैं तो आपको वीकली अपना वेट एंड मेजरमेंट करना चाहिए, इससे आपको ये पता चलेगा कौन सी चीज आपके लिए काम कर रही है। सो नेक्स्ट इज कंक्लूजन एंड पर्सनल टेकअप। तो दोस्तों ये थी Insights from the 4-Hour Body by Timothy Ferris, and my personal takeaway from this book is, अगर आप अपने फिटनेस और लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने गोल्स को, तो आपको फोकस और स्ट्रेटेजी के साथ काम करने की जरूरत है, और फेरिस के अनकन्वेंशनल टिप्स और आइडियाज आपको मजबूर कर देंगे आप हाउ कैन यू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल विद मिनिमम टाइम एंड एफर्ट के साथ। तो दोस्तों अगर आप रियली यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड फिटनेस, दिस बुक इज मस्ट रीड फॉर यू। माय दोस्तों लास्ट इज कॉल टू एक्शन, बिकॉज आई बिलीव इन माई लाइफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एक्शन देयर इज नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप इफ यू वांट or these things, if you these all the tips, and if you want to improve your life, and one more thing, if you like this video, if this adds some value in your life, and I would request you to like, subscribe my channel and comments in the comment box. I'm waiting for it, and I'll also, this is the last book for the 21 book revolution, but this is not end. I'll come with some new goals or new strategy for you, and or first of all, thanks for you for being a part of this journey, and you support a lot, and I would request you to continue with me, and thanks for your health and fitness goals.